Yes, sir. Okay, so technique number 6, you can either, like, if the term clear given to you and that is specific, for example, the way they have mentioned about cars, buses, specific terms, you can change that specific term into a general one. Now, what I mean by changing that from specific to general one, for example, they have mentioned about cars, buses, and motorbikes. So motorbikes, they are specific, cars are specific, and buses are specific. We have used a general term for that. And what is that? Various forms of motorized transport. Can you see? We converted specific terms into general term. Or what you can do, specification to generalization. For example, in a question, they have given you general term. Like, for example, people use technology every day. So now technology can be anything, clear? It's a general term. We converted them into a specific one. Like, for example, individuals rely on smartphones. So now smartphones are general. Laptops are general, clear? So what you can do, either change specific term into general or general term into specific one. Okay, so again, we call that, what we call that, you are paraphrasing. So paraphrasing consists of 7 methods I have given you. Number 1, synonyms. Number 2, antonym plus negation, and then voice change. Then you can use word formation. अच्छा आप मुझे बताए कि जो पहला वाला है, दिस वन, ये वाला, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारे पास वोकैबुलरी से रिलेटेड है कि ग्रामर से? Vocabulary. Vocab, excellent. And what about this? ये किस चीज से related है? This is negation. Yeah, so it's related to Opposite. structural change. That's a structural change, right? Okay. Grammar. And voice change किससे related है? Vocab, Grammar. grammar. It's Grammatical. grammar. Excellent. Word formation किस चीज से related है? This is Both vocabulary plus grammar. grammar. And class shift किस चीज से related है? और Grammar. ये भी ग्रामर ग्रामर है ना, तो मतलब स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया. एंड जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन यू कैन यूज क्लियर, यूजफुल व्हेन नो डायरेक्ट. ये कब आप लोग के पास मतलब वो है, अच्छा है, व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट सिनोनिम फॉर एनी वर्ड. समझ रहे? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये द benign combo method, clear? This is the method you can use. A benign paraphrase is never produced by one technique alone. जैसे आप लोग पहले मतलब किस चीज पे ज्यादा मतलब वो इन्हिसार किया करते थे, वोकैबुलरी पे, सिनोनिम्स पे, राइट? सो द प्रोफेशनल अप्रोच इज टू स्टैग 2 to 3 टेक्निक्स. आपने 2-3 टेक्निक्स इसका इस्तेमाल करना है इन अ सिंगल सेंटेंस. यूज दिस, क्लियर, यूज दिस 4 स्टेप प्रोसेस. नंबर 1, स्टेप नंबर 1, अंडरलाइन कीवर्ड्स. कीवर्ड्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्लियर? दीज 4 आर योर कीवर्ड्स. तो फिर आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 2, अप्लाई टेक्निक नंबर 1. टेक्निक नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि जो नाउन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, उनके सिनोनिम्स, उसके लिए सिनोनिम्स फाइंड करें. फिर स्टेप नंबर 3, अप्लाई टेक्निक 3, 4 एंड 5. ये 3, 4, 5 किस चीज से रिलेटेड थे? स्ट्रक्चर से थे, ग्रामर से रिलेटेड है ना? क्लियर? And then what you can do, read aloud, and does it sound natural? If yes, write it. These are the 4 steps. Let's take practical example. Suppose ये है सवाल मेरा, this is the question. Some people think government should be ban, clear, dangerous sports. तो ये मेरे पास मतलब क्या है? These are my keywords, right? What I have underlined. Am I right? Yes. तो सबसे पहले अपने क्या करना है कि some people, some individuals think, believe, government's authorities ban, prohibit hazardous activities. है ना मेरे पास? स्टेप नंबर 2 मैंने क्या कर दिया? सिनोनिम्स अप्लाई कर दिया मैंने सिनोनिम्स. थर्ड स्टेप आपने क्या करना है? थर्ड ये करना कि आपने स्ट्रक्चर, वॉइस मैंने चेंज कर दिया है, तो स्ट्रक्चर भी चेंज. यहां पे मतलब ये आखिर में डेंजर स्पोर्ट्स मैंने कहां पे इस्तेमाल कर दिया? hazardous स्पोर्टिंग. तो स्पोर्ट को मैंने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? स्पोर्टिंग में कर दिया ना. वर्ड फॉर्मेशन कर दिया मैंने. वहां पे क्या था? स्पोर्ट्स था. यहां पे मैंने आईएनजी पे कन्वर्ट कर दिया. एक्टिविटीज शुड बी. अच्छा मुझे ये बताए, ये एक्टिव में है, ये जुमला एक्टिव में, मैंने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? पैसिव. सिनोनिम चेंज हुआ ना. अब इन लोगों ने बैन लिखा था, मैंने प्रोहिबिट कर दिया, बाय द अथॉरिटीज. तो डोंट यू थिंक लाइक वी हैव अप्लाइड बोथ रूल्स, सिनोनिम्स प्लस स्ट्रक्चर, ग्रामर?
अब मेरे पास अगर बेहतर हो सकते हो मैं कैसे लिख सकता हूँ द फाइनल पैराफ्रेज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कंटेंट that hazardous sporting activities are to be prohibited by national authorities. तो मुझे ये बताए कि मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों ने मीनिंग को चेंज नहीं करना इस ये वाला ले ले द फर्स्ट वन जो आइल्स के अल्फाज है ये वाला और जो लास्ट मेरे है सो हैव आई चेंज इट्स मीनिंग मीनिंग चेंज हुआ है No. नो नंबर वन मीनिंग इज सेम अच्छा फिर मैंने आप हम्म, लोगों से कहा था कि मीनिंग नहीं और ये मैंने कहा था कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि आइल्स के अल्फाज आपके अल्फाज आइल्स वाले से बेहतर होने चाहिए कहा था कि नहीं Yes. तो मतलब कौन सवाल आपको अच्छा लग रहा है आइल्स सवाल या फाइनल पैराफ्रेजिंग Final. फाइनल वन दैट्स Final व्हाट एग्जामिनर paraphrasing. आप लोगों ने क्या Question is करना है simple. आइल्स बद ये इजी वर्ड दे रहे हैं बद तो आपने बद से बेहतर करना है क्या करना है बेहतर बदतर नहीं करना अक्सर स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं व्हाट दे डू कि जो आइल्स नहीं दिया हुआ है, बेहतर उससे से भी मतलब वो बेहतरीन करना। वो उससे भी ज्यादा कमजोर अल्फाज लिखने की कोशिश करते हैं एंड दैट्स व्हाई यू अचीव लेस बैंड देन फिर हमारे पास ये कुछ सर पैराफ्रेजिंग्स है आप लोगों ने ये आपकी किताब में ऑलरेडी है दैट हाउ टू पैराफ्रेज देम कैन यू सी दिस यूर दिस द स्टेटमेंट एंड देन हाउ यू कैन पैराफ्रेज कैन यू रीड देम मेरे पेरेंट्स read all of them number 1, 2, 3 and 4 read them and then My friends how we believe have that paraphrased homework it is focus essential on its to academic paraphrasing success. part दोनों पे फोकस करें कि कैसे हमने पैराफ्रेज किया कर दिया रीड Yeah. ओके Sir, I have one question. Yes, यस प्लीज And the second one, education too. They wrote school curriculum. So this is about the third. which one do you ask Number two. number 2 children should be taught how to manage money Yeah, here is another one, the band nine. yeah They wrote school curriculum. So I'm yeah asking about that. It is about the thought or what? School okay curriculum. it's about they look they have clearly mentioned children should be taught how to manage money at school yes, so well it's about management. teaching so what do we teach curriculum right Yeah, so that's why we have mentioned financial literacy means what money. clear managing money looking after money are to be incorporated into school curriculum school curriculum means what like if that's a part of your curriculum so definitely you study that am I right Okay. yeah so that's why we Yeah. have mentioned what into school curriculum so we have clear presented in a better form सर मेरा एक क्वेश्चन है yes please सर अगर हम इस तरह स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करें तो yes हमें तो अ, वो टारगेट किस तरह मिलेगा इंट्रोडक्शन में जो 40 to 60 वर्ड्स हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाई क्या नाम है आपका This is बिलाल just background okay statement. this is the background after this we are going to write down the thesis statement as well there are two Yeah. parts not one part ओके सर yeah so the second part is still like we will study that tomorrow okay
अभी तो आप लोगों ने क्या काम करना है? व्हाट इज योर लाइक, लेट्स कम टुवर्ड्स द, इसमें सारी ये पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स है, क्लियर? कॉमन पैराफ्रेजिंग ट्रैप्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। नंबर वन, रिप्लेसिंग टेक्निकल टर्म्स रॉन्ग सिनोनिम्स। ये आप लोगों ने नहीं करना। टेक्निकल टर्म्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग डू नॉट राइट ऑन वर्ल्ड हीटिंग और द इंटरनेट, द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ कंप्यूटर, ये चीजें आप लोगों ने नहीं चेंज करना है, नंबर वन। नंबर टू, यूजिंग अ थिसारस। थिसारस का मतलब है कि जो सिनोनिम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो थिसारस को प्रॉपर तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, सिनोनिम को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। लाइक गलत सिनोनिम नहीं इस्तेमाल करना है। इफ यू यूज अ रॉन्ग, क्लियर, अ वर्ड स्वैप दैट साउंड्स academic but doesn't fit the context, तो फिर फॉर एग्जांपल चेंजिंग इंपॉर्टेंट टू व्हाट, वेटी। तो इंपॉर्टेंट तो वेटी, तो ये दोनों मतलब तो नहीं हो सकता ना, इंपॉर्टेंट अहम, वेटी। ग्रामेटिकली करेक्ट मतलब ग्रामर तो ठीक होगा, बट अननेचुरल, ऑलवेज चेक collocations. Changing meaning while paraphrasing, rewording so heavily that the original idea is lost. The examiner penalizes this under task response, not just LR. Meaning must be preserved 100%. Over paraphrasing the entire question, rewriting every single word, including small functions like a, the, and. This creates what? Clumsy English, and paraphrase content words only. And then memorize paraphrasing? No. Mixing formal and informal? No. Like individual and kids? No. Individuals को kids, because kids is an informal word. You can write children, not kids. Grammar error in the paraphrasing, तो grammar को आप लोग सही, trying complex structures, relative clauses, inversions without controlling them, तो फिर आपके स्कोर कम हो सकते हैं. Paraphrasing only the introduction. Okay, strong students paraphrase the question once and then copy it back into the conclusion. देखिए, आप हमेशा याद रखें कि पैराफ्रेजिंग जो है ना, वो आपको 2 बार करना पड़ेगा. आपका जो कंक्लूजन है ना, वो दैट्स द मिरर इमेज ऑफ यूअर्स. जैसे मतलब एक इंसान शीशे में खड़ा है ना, तो इस साइड पे इंट्रोडक्शन है, उस साइड पे जो है वो कंक्लूजन है, वही चीज आपने दोबारा फिर लिखना होगा. तो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स पैराफ्रेज द क्वेश्चन वंस, देन कॉपी इट बैक इन द कंक्लूजन, वही चीज पर आपने उसी चीज को दोबारा, द कंक्लूजन नीड्स व्हाट, सेकंड डिफरेंट पैराफ्रेज, प्लान इट टू फ्रॉम द स्टार्ट. क्या आपने उसी चीज को 2 बार लिखना है. इज दिस क्लियर? और ये टेक्निक्स है कि जो टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें. और फिर आपने पैराफ्रेजिंग के लिए ये आपके पास कुछ अल्फाज है, वर्ड्स है कि आप यूज करें. पीपल के लिए क्या क्या, एंड थिंक एंड बिलीव, एंड फॉर एवरी वर्ड बैड एंड गुड, एंड दीज वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड नाउअडेज, क्लियर? सो हाउ यू कैन एकेडमिक रिप्लेसमेंट, आपके जो कॉमन वर्ड्स है उन्हें एकेडमिक वर्ड्स में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट फॉर यू. यू मे हैव इन योर बुक, ये आपकी किताब में होंगे, ठीक है, कि ये अल्फाज आपने लिखने हैं फिर. सर मेरा क्वेश्चन है, यस प्लीज. सर ये जो अल्फाज होते स्टेटमेंट में जो हम चेंज नहीं कर सकते, जी. जिस तरह आपने बताया, तो हम पैराग्राफ में भी वो मतलब जो स्टार्टिंग सेंटेंस लिखेंगे, तो स्टार्ट तो उसी वर्ड से लेंगे ना कहीं तो लिखेंगे ना. समझे नहीं आपकी बात को, मैंने क्या कहा आपने? ये जो हमारे पास स्टेटमेंट में होती है ना, जब हम हाँ. पैराफ्रेजिंग करते हैं इंट्रोडक्शन हम्म. में, हम्म. वो तो हो गया, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते. तो हम्म. हमें तो उसके बारे में फिर पैराग्राफ भी लिखना पड़ेगा ना नीचे. हम्म. तो उसमें भी तो मतलब उसके सिनोनिम यूज करेंगे या वो वर्ड यूज कर सकते हैं? तो जो वर्ड आप इस चेंज नहीं कर सकते, जो मेन वर्ड है, जैसे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन ही होगा ना भाई. फिर पोल्यूशन के लिए जी. आपने प्रोनाउंस के इस्तेमाल करना है, एट. समझ रहे हो? देन यू आर सपोज टू यूज प्रोनाउंस फॉर दैट. ये आपने एग्जांपल दिया था ना पैराफ्रेजिंग में, इंट्रोडक्शन में, हाँ. वहां पर दी इंटरनेट था, दी इंटरनेट. तो हम्म. ये हम आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेट, ये हम चेंज नहीं कर सकते जी. यहाँ पर. जी. तो इसी तरह हम फिर जब इसके बारे में पैराग्राफ तो लिखेंगे, आपने इंटरनेट तो ही वहां लिखना पर है ना. हम इंटरनेट नहीं लिखना है, और क्या लिखोगे आप? दी इंटरनेट, इसी तो तरह एक दी बार अगर आपने ग्लोबल इंटरनेट वार्मिंग लिख दिया, तो दोबारा उस पे इंटरनेट नहीं लिखोगे ना, उसके लिए प्रोनाउन लिखोगे, एट. पैराग्राफ में सर. तो फिर प्रोनाउन पैराग्राफ में एक बार अगर आपने इंटरनेट लिख दिया, कहीं पर भी आपने एक बार इंटरनेट लिख दिया, तो उसके बाद आपने फॉलो करना है किस चीज के साथ? प्रोनाउन के साथ. सर तो ये सर जो मत वर्ड चेंज नहीं होते ना उनके लिए हम प्रोनाउन लिखेंगे शॉर्ट में। भाई एक वर्ड के, मेरा फरीद साफी नाम है, तो फरीद साफी आपको आप चेंज कर सकते हो नहीं?
तो एक बार अगर आपने फरीद साफी लिख दिया तो उसके बाद आपने क्या लिखना है? प्रोनाउन यूज करें। तो प्रोनाउन प्रोनाउन यूज यूज करो ना, करना है। ही इस्तेमाल करो ना बस। बस ही शी एट दे सारे ये वाली प्रोनाउन बस सिंपल यूज करेंगे। तो प्रोनाउन भाई इस्तेमाल एक करना देना बात को बिल्सन तो हाँ बार बार जी। फरीद साफी नहीं शीरी कले। यू कांट राइट माय नेम अगेन हाँ एंड जी। अगेन, यू विल राइट ही, नॉट जी फरीद सर। साफी। ओके, हाँ जी। दैट्स इट बकिया सर था। जी द पीडीएफ पर मुझे कम से मिला जाता है सर जी पे स्क्रीन। दा पीडीएफ ने दे पूरा किताब दे कुर्बान ऑर्डर का खपल किताब जानता ऑर्डर का ऑफिस ना। हाँ जी। जगत ऑफिस नंबर बाने मैसेज का बताओ सर डिलीवरी की कोर्ता खा। सही। यस इंशाल्लाह। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखे, ये जो लास्ट वर्ड्स है ना, ये आपने माइंड में रखना है। पैराफ्रेजिंग इज नॉट अबाउट चेंजिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट थिंकिंग द सेम थॉट इन हायर फॉर्म ऑफ इंग्लिश। ये हमेशा याद रखे, सिर्फ चेंज नहीं करना होता, बेहतर लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपके अच्छे बैंड आ जाए। बिल्कुल सर ठीक है। ओके, सो एनी आइए। क्वेश्चन फॉर मी प्लीज?